फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, राइट। पहले लिस्ट बना लेते हैं। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर, क्लोरोफिल कंटेंट, क्लोरोफिल कंटेंट, ठीक है। ये मेजर फैक्टर्स हैं। लाइट में इंटेंसिटी does not affect intensity does not affect the rate of photosynthesis, the rate of photosynthesis। इंटेंसिटी का एज सच कोई फर्क नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। किस चीज पे इफेक्ट नहीं होता? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, ठीक है। However, it is affected by quality और wavelength और color of light। Rates with respect to colors और wavelength of light। अगर इसकी बात करें, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है व्हाइट लाइट में। व्हाइट लाइट, then red, then blue, and minimum photosynthesis occurs in green light। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, एक चीज और होती है, इंटरमीडिएट लाइट। Intermittent light means light in short durations. Intermittent light, light exposure for short durations, right, followed by periods of darkness, This is intermediate light, right? Intermediate light increases efficiency of photosynthesis। एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इंटरमीडिएट लाइट को अगर हम प्लेस करें तो ये व्हाइट लाइट से भी आगे आ जाती है। सो इंटरमीडिएट लाइट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, राइट। ये चीज हमने इसमें यहाँ पे ऐड कर दी। व्हाट इज दिस IL?
IL is intermittent light. Okay. Now, so light we're studying. First thing that we studied was color. Now, to understand this, we study spectra, the spectrums. One is the absorption spectrum, and the another one is action spectrum. Action spectrum, right? Absorption spectrum का अगर हम ग्राफ बनाए, यहां से वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, BI BGYOR विद ग्योर, ठीक है। अच्छा, इस पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये ब्लू में, फिर ग्रीन में हम फिर ऑरेंज से होते हुए रेड में, फिर दोबारा से। So maximum absorption occurs in the red, sorry, in the blue range. Maximum absorption is seen in the blue range. This is the peak, right? But as far as red is concerned, the red is not absorbed that much. Okay. So maximum absorption blue, right? And then minimum absorption green, right? Intermediate is red, बीच में red है, ठीक है, moderate. अच्छा जी, अब एक्शन स्पेक्ट्रम। अब एक्शन स्पेक्ट्रम का अगर हम ग्राफ बनाए, उसको यहां बना देते हैं। ये दो ग्राफ्स इंडिपेंडेंटली बनाए हुए होते हैं। ये जो आपके एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है, वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के लिए अलग अलग दे रखा है। देयर आर टू लाइंस, राइट? You would just try to understand this graph. Now this happens in blue, then it again it falls, then again it rises, right? The peaks are again higher in the case of blue in comparison to the red. This is blue, and this is for the red. But then we say that photosynthesis maximally occurs in red light. By observing these two graphs, it becomes quite confusing. If we observe these two graphs, it becomes confusing. There is maximum absorption in blue, there is maximum action produced in blue in comparison to the red, right? So why are we saying that photosynthesis, the rate of photosynthesis is higher in case of the rate of photosynthesis in red is higher in comparison to the rate of photosynthesis in blue? How can we, why can we say this thing? Why is this conclusion? Now to understand this conclusion, what you need to do is you need to superimpose these graphs upon each other.
I would superimpose this graph on this, right? हम इस ग्राफ को उठा के इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि फोटोसिंथेसिस एक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, फोटोसिंथेसिस यहां पे इतना हुआ, ठीक है, ये एक्शन है। एक्शन की लाइन हमेशा एब्जॉर्प्शन से नीचे आएगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो इतना, दिस इज इनपुट, दिस एब्जॉर्प्शन टेल्स अस अबाउट द इनपुट, and the action is basically related to the output, right? Now in this case, what happens in the case of red, in case of red, the difference between these two peaks, the difference of absorption and the difference of action is pretty less, कम है. But in this case, the difference between the action, sorry, absorption and the action is higher. It is just an explanatory graph, okay? So the difference between input and output is more. Plus, there is one more thing. In the case of blue, the plant is absorbing more energy. In case of red, the plant is absorbing less energy. Right? So basically, this means that in the case of red, using less energy in red, using less energy, plants are able to produce or perform more photosynthesis. यहां पे क्या हुआ? कम एनर्जी लेकर प्लांट्स ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस इन केस ऑफ रेड लाइट is higher in comparison to photosynthesis in blue light. यहाँ पे ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं पर उतना फोटोसिंथेसिस नहीं होता जितना कि कम एनर्जी पर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रेड लाइट में कर पाते हैं. Now there is a term, quantum yield. Quantum yield. Quantum yield is oxygen evolved per quanta of light, right? For one molecule of oxygen, for one O2, 8 quanta of light are used. So the average photosynthetic efficiency, average photosynthetic efficiency
is equal to 1 by 8 multiplied by 100. It comes up to 12.5%. The efficiency of photosynthesis 12.5% only, right? The efficiency is 12.5% only. The efficiency of respiration is 39.8%, or approximately 40%. 60% is lost as heat. This is per glucose molecule. This is for one glucose molecule. ठीक है, तो हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को इंडिविजुअली देखने से समझ में नहीं आता, हमको इनको सुपर इम्पोज करना पड़ेगा, तब हमें पता चलता है कौन सी लाइट में कितनी एनर्जी लेकर कितना काम हो रहा है। इनपुट आउटपुट दोनों देख के हमको पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम किस में हो रही है। You can add one more thing over here. The photosystems are more sensitive to red light. PS1 and PS2, they are functional in red light range. ये हो सकता है कि ऑप्शंस में आपको सीधा एग्जामिनर यही लाइन दे दे, आपको क्वेश्चन दिया हो why photosynthesis in red is more in comparison to blue, because the photosystems first and second, they are functional in the red light range. These pigments get excited, the pigments of PS1 and PS2, the reaction centers, they get excited easily in red light range. In case of blue, there is more wastage. Increase in intensity of light in certain plants, that is C3 plants, the plants of the cooler regions, causes a wasteful process called photorespiration. Increase in intensity of light, increase oxygen output, rubisco becomes oxygenase. It catalyzes the breakdown of RUBP into two compounds, a 3-carbon PGAL and 2-carbon glycolate. 25% of the energy is of the carbon is lost in C2 cycle. इसको फटाफट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।